हाँ गाइस, वेलकम टू ओपीएससी वाला फिजिक्स वाला केमती अच्छी आपण मैंने ललित सर आपण मानक आउ गोटे सेसन नहीं आसी जोटा स्तूपा स्तूपा आर्किटेक्चर तापर डिटेल्स आम जाना स्तूपा कौन स्तूपार इम्पोर्टेंस कौन आम वन बाय वन जाना। समस्ते जी जार आसी जातु जल्दी जल्दी आसतु आपण मैंने जो मैंने सांग साथी सहित शेयर कर दिंतु वीडियो को सो दैट समस्ते इनफॉरमेशन पाइबे। मो आवाज समस्त शुभुची गाइज? जी लाइव अच्छा टिके हाई करो, हेलो करो। ओके तो यूपीएससी सब बड़ प्रतिज्ञा पर्व यूपीएससी ओपीएससी आम सर्वसक्षम 2.0 ओपीएससी ओसीएस फाउंडेशन मात्र 3499 संपन्न 2.0 आरआई एमिन अमीन मेंस बैच अनुभाग बैच अध्ययन बैच आक्रोश बैच यूनिटी इंटीग्रिटी बैच ये सब आपण मैंने वेरी लो प्राइस रे पाइबे। सो जल्दी जल्दी आपण मैंने ये स्टार्ट करंतु। सो आज गोटे मु कोट्स कहबी फेल्युअर इज द सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन। फेल्युअर दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। ट्राई करंतु आपण को लाइफ रे ये फॉलो करिया पई कौन ना फेल्युअर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली स्टार्ट अगेन विथ मोर इंटेलिजेंटली ना कि जेमिति करूथले जेमिति चालुथला सेमिति चलिबो नाही आज्ञा आपण को लागिबा को पड़िबो इंटेलिजेंटली लगे पड़िबो एंड वर्क अगेन एंड अगेन। So failure is simply the opportunity to begin again and this time more intelligently. I hope तुम पाठ पढ़ारे ये काम रे लगेइबो डेफिनेटली ये हेल्प करियो तुमको। स्तूपा आर्किटेक्चर आमे देखिबा कि इवोल्यूशन ऑफ स्तूपा architectural significance of stupa and architectural feature of stupa। निहारिका गुड आफ्टरनून केमती अच्छा केमती कौन प्रिपरेशन तुम चलची कौन प्रिपेयर करूच?
ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। सिविल सर्विस ପାଇଁ प्रिपेयर करछो या एनी अदर एग्जाम ପାଇଁ प्रिपेयर करछो? सो स्तूपा आर्किटेक्चर ऊपर आमे इन डिटेल्स देखिबा। फोर्टी 45 to 1 hour भितर आमे सेशन सारिबा। Less than 45 minutes we will complete. So be there till end. Stupa अरे कौन स्तूपा बेसिकली बुरियल माउंट्स स्तूप आमे देखिबो एमती मरिगला परे एमती स्तूप करू प्रिवेलेंट इन इंडिया फ्रॉम वैदिक पीरियड ऑफ टाइम जेतले आमे एबे भी डेथ जहार हुए तार हाड़ को नहीं कि तार अंश विशेष नहीं कि आमे या तार आसेस गोटे नहीं कि गोटे जगह रखो এবং ताको सिटी स्तूपा करू। ओके 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 निहारिका माने तुम्हें बैचेस मेन पेड बैचेस रो अच्छो ना केवल यूट्यूब देखुचो? सो relics asset and dead are kept. So it is a conventional representation of funeral columns in which relics and ashes of the dead were kept. During the period of Ashoka, the art of stupa reached its climax. Almost 84,000 stupa are erected during the Ashoka period. हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम तो ही पारे जो माने जॉइन करछ गोटे समस्त वीडियो को लाइक करंतु हाँ गोटे सांग साथी सहित शेयर करंतु एवं गोटे कमेंट दियंतु जोंटी जा बुझिबार अछि। ओके ओके निहारिका ठीक अच्छे टेक योर टाइम डोंट वरी जो जिते फिल हम जो लगे कि मुझे पढ़िया जरूरी से जॉइन कर ऑल दो ए वैदिक ट्रेडिशन रु आमे स्तूपा भाया स्ट्रक्चर आमर अच्छी जो अंडा स्ट्रक्चर जो बुद्धिस्ट अशोका जो समय बिल्ड करते सारनाथ वगैरह से भाया नाला। आफ्टर बुद्धांकर डेथ 9 स्तूपा आर इरेक्टेड 8टा जोटा कि मेडी at their medi while 9th had a pot in which relics were originally kept. So basic diagram represent various part of the stupa. आमे देखिबा the core of the stupa was made of unburned bricks. So initially देखिबो ए बलिया stupa थिला. This is the basic diagram.
आई होप तुम्हें सांची स्तूपा देखि किंबा आमर भुवनेश्वर जो स्तूप धौली धौली रे देखि समस्ते छत्रा दिस इज छत्रा ये यास्ती दिस इज हार्मिका दिस इज डोम दिस इज स्तूपा शेप्ड तरणा द्वारा ईस्ट रे तरणा द्वारा वेस्ट तरणा ईस्ट वेस्ट तरणा एंड साउथ तरणा नॉर्थ तरणा एमती थाए चारिपटे आ गोटे सार्कम्बुलेटरी पाथ थाए जो थे चारिपटे बुलंती चारिपटे बुलिया सार्कम्बुलेटरी पाथ तुम थाए सो सांची स्तूपा in Madhya Pradesh is the most famous of the Ashokan stupa. Piprawa stupa in Uttar Pradesh is the oldest one. सांची स्तूपा सबुठु अशोकार सबुठु फेमस स्तूपा बहुत ब्यूटीफुल स्तूपा पिप्राव स्तूपा इन उत्तर प्रदेश इज द ओल्डेस्ट वन द लोकेशन ऑफ 9 स्तूपा जोटा कि बिल्ट आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा कौटी ना राजगृह वैशाली कपिलवस्तु आलाकपा रामग्राम बिथापिदा पावापुरी जोने पावा कुशीनगर एंड पिपलीवाना पिपालीवाना ये चारिटा ये 8टा प्लेसेस रे सॉरी 9 स्तूपा बिल्ड कराइतला आफ्टर डेथ ऑफ अशोका So stupa literally mean heap or pile is a reliquary or a shrine containing remains of the holy and sainted person or tanga relics. Originally in India prior to 5th century BC, originating in India 5th century BC purvaru as a tomb of holy men and evolving afterwards into sacred sites dedicated to Buddha. 563 to 483 BC. Later stupa were also raised to honor Buddhist arhats. Buddhist saint arhat तांको honor करिया पे respect पे तांकर ये होते Bodhisattva, enlightened ones, other saintly figure or local deities. So stupa a hemispherical structure. तुम्हें देखिलो गोटे हेमिस्फीयर वाला structure, hemispherical structure with spire at the top, sometimes situated on the base that varies in shape and size. Circumambulatory part को walkway कहती, visitor ताप चारिपटे बुलंती, walkway visitor ता चारिपटे बुलंती. Buddhism was the earliest Indian religion to require large communal space for worship. This led to 3 types of architectural forms: the stupa, the vihara, and the chaitya. 3 main architectural forms. गोटे हला स्तूपा नहीं गोटे विहार एंड चैत्य. विहार मीन्स प्लेस ऑफ रेस्ट, चैत्य मीन्स प्लेस ऑफ वर्शिप जोटी पूजा करा जाए. ओके सेटा तुम्हें पाइयो. बुझी पारुछ समस्ते. मेनी रिलीजियस
रिलेटेड टू बुद्धिस्ट फर्स्ट सेंचुरी बीसी रु फर्स्ट सेंचुरी एडी भीतर बहुत सारा रिलीजियस ये एमर्जेंस होईची बुद्धिस्ट श्राइन स्तूपार जो टर्म स्तूपा जो टर्म स्तूपार टर्म जब देखिबो प्रथम रु ये ऋग्वेद टाइम रे यूज करा होतला ऋग्वेद refer to stupa raised by king Varuna above the forest in a place having no foundation. Pali word thupa means conical heap, a pile or a mound or a conical or bell-shaped shrine containing a relic. Stupa originally the famous or popular cult of the dead is large burial mound containing relics of Buddha. Clear guys? तुम जी जार डाउट अच्छी पचारि चल जार डाउट अच्छी जार जेकोसी प्रॉब्लम अच्छी लेट मी नो इट सेलिब्रेट बुद्धास परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण स्तूपा कौन सेलिब्रेट करे बुद्धांकर परिनिर्वाण या डेथ को एंड ऑफ साइकिल ऑफ सफरिंग symbolizes his eternal body and is an object of worship. There is evidence of community patronage of landowner, merchants, officials, monks, nuns and artisans associated with this Buddhist project. Initially, stupa were Buddha's relic palace. Then it got extended to his follower as well as gradual stupa itself become the object of worship. धीरे धीरे ये पूजा करिया को लगिले. ओके सो केमिति इवोल्यूशन हैला द ग्रेट सांची स्तूपा जोंडे कि इंडिया रे मध्य प्रदेश रे और बौद्धनाथ स्तूपा एट काठमांडू Nepal are large ornate structure while others are more modest. And जते भी स्तूपा हेची लार्ज ग्रेट स्तूपा अशोका को क्रेडिट दवा को पड़िबो अशोका कलिंग वार परे कलिंग वार हैला 261 बीसी रे तापरे अशोका कन्वर्ट हे गले बुद्धिज्म को एवं सेई टू स्तूपा मेकिंग इंस्क्रिप्शन बुद्धिस्ट मॉन्क को प्रमोट करिबा एंड बुद्धिस्ट बिकम वर्ल्ड रिलीजन हबा ये अशोकांक छड़ा के कार शक्ति नथिला अशोका पूर्व देखिबो 8 स्तूपा थिला और 10 स्तूपा जोंडा कि बुद्धा को डेडिकेट थिला ये कौन करले सबु जो 8-9टा स्तूपा या 10टा स्तूपा थिला सेई थ्रु से भांगिले भांगी की तांकर जो रिमेन्स थिला बुद्धांकर सबु आनिले आनी की 84,000 अकॉर्डिंग टू लीजेंड 84,000 स्तूपा ये बनेले 84,000 वेरी बिग नंबर बट किसी बिलीव करंतनी ए नंबर को कौन भाव 84,000 हेइथिबो स्तूपा नमस्ते पिहू केमिति अच्छ नमस्कारम apart from Buddhist stupa
हिंदू स्तूपा भी अच्छी मेजरली अशोका समय बुद्धिस्ट स्तूपा देयर आर आल्सो हिंदू एंड जैन स्तूपा but Buddhist stupa remain the most popular and their construction worldwide has been most prolific. कोउंटी अछि स्तूपर श्रीलंका नेपाल चाइना यूरोपियन नेशन ऑस्ट्रेलिया यूएस and more. बुद्धांकर जो डेथ है कुशीनगर में महापरिनिर्वाण है तांकर जो रेलिक्स एसएस एंड रेलिक्स डिस्ट्रीब्यूट करागला 8टा महाजनपदस रे. आई एम फाइन पीओ व्हाट अबाउट यू वेरी गुड यू आर फाइन. इनिशियली 8 स्तूपा थिला जोंडे कि शारीरिक चैत्य कहुए और कंस्ट्रक्टेड एंड 8 सेंटर राजगृह वैशाली कपिलवस्तु अलकप्पा रामग्राम विथदीय पावा एंड कुशीनगर. द्रोण द ब्राह्मण who initiated the destruction or distribution himself erected a stupa to enshrine the urn that was used to divide the relics. Then Mauryan Samero basically stupa है so all together 10 stupa. पिपलावाना अरे जो मौर्यन समर बिल्ड है खासकर अशोका समर 8 on corporal relics and 2 on urns and over wood ashes by Drona and Mayuras. Stupa is built on the relics of Buddha like bodily remains and objects used by him. They are built by the donation of the king, especially Satvahana. Guilds such as ivory worker, men, women, bhikkhus and bhikkhunis, ये सब उनका donation है. So Jataka mention about existence of stupa, but does not throw any light on the structural details of stupa. Jataka, नमस्कार सूर्य, केमती अच्छ, केमती कौन प्रिपरेशन तुम सब चलची, लेट मी नो. सुजाता जातक या बही या सुता describe stupa as raised earthen mounds to commemorate the deceased. This indicates that most probably prior to Ashoka, most of the stupa were made of clay. Archaeological excavation and findings proved that during Ashoka's reign, use of bricks and stone for constructional purpose became popular. घर कहते पाइबनी तुम पाखे ताले भल अपॉर्चुनिटी अच्छी शौर्य. You can work hard and prove them wrong and they will be the happiest one if you prove them wrong. जदि गोटे लाइफ रे गोटे डिसीजन नहीं नब कि मु किसी करी कि देखेबी तुम्हें डेफिनेटली करदेव. तुम भीतर से जदि डेडिकेशन परसिवरेंस आत्मविश्वास थिबो कॉन्फिडेंस थिबो तुम्हें किसी भी करि परिबो. तो नथिंग इज इम्पॉसिबल प्रोवाइडेड you should not take this as a lightly, you have to take it as a everything for you. जीवन पूरा जमती देदेव या छड़ा तुम लाइफ रे किसी नाही जमती से भाया प्रिपरेशन करि परिबो जदि कर. देख नथिंग विल कम इजी. तुम्हें कहब मु 2 मास पढ़देवी एग्जाम क्लीयर हो मु मासे पढ़देवी एग्जाम क्लीयर हो सेमती हुए ना ना सेमती केबे हबो.
Let them prove wrong. So बिंबिसार अजातशत्रु मध्य किसी कंस्ट्रक्ट करथिले स्तूपा बुद्धा को ऑनर करिया पई। जेतले बुद्धिज्म रो ब्रेक हेला, जेतले बुद्धिज्म रो डेथ माने ब्रेक हेगला महायान आ हिनायान, महायान माने बुद्धा को इमेज वर्शिप करिया को लागले आ सेठी इंपोर्टेंस रहिला नहीं रेलिक्स रो, बुद्धा रो रेलिक्स रो इंपोर्टेंस किसी रहिला नहीं। आफ्टर अशोका none of the Mauryan rulers showed any interest in propagating Buddhism। तो ये गोटे प्रॉब्लम्स थिला। ये देखो स्तूपा, ग्रेट स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश, सांची स्तूपा, हैव यू सीन इट? What is the difference between Mahayana and Hinayana? Buddhayana नुहे, महायाना बेसिकली दीटा पार्ट है ये बुद्धिज्म रो। महायाना माने ग्रेट व्हीकल, महायान, महायान यान जान माने व्हीकल, महा माने ग्रेट। बेसिकली दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ निर्वाण ऑफ अदर्स। देन हीनायाना, हीनयाना, हीन माने लेसर, यान माने व्हीकल, लेसर व्हीकल, माने से माने निजर साल्वेशन पाई चेष्टा करती। एमाने निर्वाण प्राप्ति या साल्वेशन या मोक्ष प्राप्ति पीपुल को पाई चाहती, से महान एमाने निज पाई निजे केमिति निर्वाण प्राप्ति हेबे, निज केमिति मोक्ष प्राप्ति हेबे, निज केमिति साल्वेशन पाइबे, एटा हीनायना चाहती। हीनायना बुद्धा को एज ए टीचर मानुथले, महायाना बुद्धा को एज ए गॉड मानुथले। हीनायना हिंदू ट्रेडिशन को समाव फॉलो करथले, महायाना बेसिकली बुद्धिज्म को फॉलो करथले एवं बुद्धांगर टीचर एंड बुद्धिस्ट प्रीचिंग को फॉलो करथले।
एबे सुबिला एबे आसिला साउंड एबे आसी थी जरूर एक्चुअली बैटरी सरी जाइथिला ओके through an understanding of the Four Noble Truths and practicing the precepts of the Eightfold Path, one could elevate one's understanding of existence. जानिच ये आम बुद्धिजिम जो मुझे पढ़ाए से बुझाए ये आउ डिटेल्स बुझौनी ये मु तुमको स्तूपा विषय कहीदे कि केमी स्ट्रक्चर कौन कौन अच्छी तार सो तुम डिजायर जिते न हटेब तुम्हें दुख रू निवृत्त हेनी तो हे खुशी रही किसी महत्वाकांक्षा रखनी कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग एज इज जस्ट ए नंबर एज इज जस्ट ए नंबर Buddhist stupa is physical manifestation of his understanding. So these are basically large hemisphere stupa रे देखियो large hemisphere descend from the yasti to perform the base sometimes square थाए और चारिटा गेट थाए गेट को तोरण द्वारा कहा जाए तोरण द्वारा या तोरण करेस्पॉन्डिंग टू फोर कार्डिनल डायरेक्शन चारिटा डायरेक्शन कौन ईस्ट रे बर्थ ऑफ बुद्धा को सिंबलाइज करे साउथ गेट एनलाइटमेंट ऑफ द बुद्धा वेस्ट गेट फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा नॉर्थ गेट निर्वाण और रिलीज फ्रॉम द संसार ऑफ बुद्धा जेमिति महापरिनिर्वाण कहा जाए ये देख चारिटा गेट ये नॉर्थ ये साउथ ये ईस्ट ये वेस्ट एटा को तोरण द्वारा कहा जाए ईस्ट है बर्थ ऑफ बुद्धा वेस्ट है फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा नॉर्थ है एनलाइटमेंट एंड साउथ रे निर्वाण प्राप्ति ये चारिटा डायरेक्शन रे थाए Vajrayana is also not B Vajrayana. This is one of the sect of Buddhist. Buddhism गोटे sect Vajrayana. So ये देखो ये गेट चारिटा गेट देखो अंडा सेप डूम सेप यारी ऊपर अच्छी देन ता ऊपर है देखो एटा हार्मिका ता ऊपर को छत्रा एंड एक्सिस पिलर एमती ए टू एक्सिस पिलर देखो बाहर की जीवो एटा ला अंडा ये अंडा तोरणा है गेट ये जो गेट देख लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिस इज तोरणा द्वारा स्तूपार आर्किटेक्चर बुझी पारुछ तो ना किसी डाउट अच्छी बाबू माने बाबू रे कह कौन कौन डाउट अच्छी बेसिक स्ट्रक्चर स्तूपा कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर प्लेटफॉर्म नोन एज मेडी द मेडी देयर इज ए हेमिस्फीयर स्ट्रक्चर व्हिच इज encloses as cascade the medi is surrounded by vedika
जोटा कि बाउंड्री वाल कहुए दिस इज वेदिका सॉरी ए हार्मिका पाखे यहाँ है वेदिका यहाँ हार्मिका यहाँ वेदिका छत्रा between Medhi and Vedika between the Medhi and the Vedika was a production path or circumambulatory path. On the stupa there was a harmika followed by one or more chatris which signified axis mundi or axis of the world. एटा देख एटा देखले आउ टिके इमेजिन करि परथबो तुम इमेजिनेशन आउ टिके क्लारिटी आसुथबो समस्ते वीडियो को लाइक करछन नहीं करना यहाँ पर देखिए फीचर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड निहारिका शौर्य गोटे अंडरस्टैंडिंग आसला ना क्लारिटी आसला स्तूपार जो कोर थाए सेटा अनबर्नड ब्रिक्स थाए जला हुआ ब्रिक्स न थाए तो माने बहुत बढ़िया पिला गुड़ा बहुत बढ़िया बाबरे स्तूपा कोर वाज कंपोज्ड ऑफ अनबर्न्ड ब्रिक्स and with burned bricks outer face covered in the thick coating of plaster. The stupa was kept by wooden railing that encircled a प्रदक्षिण path circumambulatory path देखो एटा प्रदक्षिण path नहीं एटा उड़िल एटा ये देखो एटा अंडा एटा को भी प्रदक्षिण पाथ कह जाए एटा भी कह जाए बेसिकली अलाउ करा जाए नहीं एटा को अलाउ करा जाए रेलिंग्स walkway it is a magnificent stupa with circumambulatory root and circular mounts during the time of Ashoka. The big stupa at Sanchi was erected with bricks then covered with the stone and many features further addition were made. Gateway were added in the addition to the circumambulatory circuit. With the elaboration of in stupa design, architecture and sculpture had plenty of room to plan elaboration and carve out images. Wooden sculpture were used to embellish the Medhi and Torana. As a form of worship, devotee walk around the production path जोटे कि बुलिकी पूजा करती है ना नहीं प्रदक्षिण करती तुम्हें देखो आमर पुरी जगन्नाथ टेम्पल भी प्रदक्षिण पाथ अच्छी पूरा बुले बुली मंदिर चारिपटे बुलू से भाया तीन टा छत्रा अच्छी
and sculpture are largely utilized to decorate stupa and the torana and the medhi as well as the form of religious expression. Three chhatra देखिबो chhatra तीनटा chhatra एटा तीनटा chhatra पाइबो. On the stupa symbolize the Buddhist three ratna, that is Buddha, the enlightened, Dhamma, doctrine, and Sangha, community. Bairat in Rajasthan has one of the outstanding example of stupa building from the 3rd century BC. Sanchi stupa, Madhya Pradesh an example and most well known Ashoka stupa. Sanchi stupa बहुत famous, तुम जानते हो पिलाड़ी तुम्हें सुनी थी वो. And oldest है Piprawa stupa in Uttar Pradesh. Structure of stupa, terminology देखिए. अंडा माने semi circular mold built on earth. Hermica, it is the balcony like structure above the अंडा ऊपर balcony एटा अंडा ऊपर जो balcony वाला करी नी एटा Hermica. It is believed to be the living place of God. Yasti, it is the mast above Hermica and surmounted by the umbrella. Then railing around the mold, believed to separate. Railing देखिलो around the mound, believed to separate the stupa from surrounding world and make it sacred. ये देखो ये railing टा, this railing, ये railing जो अच्छी ये basically एठी production पर ये direct touch है आपको न करी पारंतु. बुझिला सेति पई ये railing दिया है. Chhatra, it is the umbrella built on the top of the dome. Production path, it is the path for clockwise circumambulation. Surrounded by the fence built encircling the stupa. Stone balustrade, that wooden fence consists of thavas. Original upright post thai, kept by Unisas, continuous keeping. These posts are connected by 3 horizontal rails called susis. Torana gateway having sculpture depicting Jataka story. बुद्धांकर जातक स्टोरी एथिरे अछि. सर बिना पढ़ी के जॉब केमिति क्रैक करियबो? दरकार नहीं पढ़िया भाई. हाँ यस नरेंद्र ए पीहू बढ़िया आंसर देइछ. नरेंद्र जो जगह अच्छे से जगह थाओ. ये सब थॉट स्क्वाड आउसी. नमस्ते सस्मिता. मेढ़ी गोटे स्क्वायर प्लाटफॉर्म तोरणा है जोटा कि गेट ये बहुत सजा है. अशोकांकर जातक स्टोरी पुराना स्टोरी विषय ये मेंशन अच्छी. एनिकनिस्ट बुद्धा, it is related to Hinayana and Theravada Buddhism. It prohibits representing Buddha in human form. Instead, they use symbol. For example, empty seat to indicate meditation of Buddha. Wheel represent Dharma Chakra and fast sermon of Buddha in Sarnath. Stupa indicate Mahaparinirvana of Buddha. So, mane ita एनिकनिस्ट बुद्धा. केमिति अच सस्मिता? अरे नरेंद्र कौन एमिति क्वेश्चंस कौन?
एते कौन डेंजरस क्वेश्चंस पचार देलो डेंजरस क्वेश्चन नुह ये देख एटा आउरी टिके प्रैक्टिकल एटा ला तोरण द्वार देख एथिरे सब नाही बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग्स अछि एगुडा को बेसिकली पशु बुद्धांकर जातक स्टोरी विषय अछि हार्मिका एटा ला हार्मिका वेदिस ये ला अंडा ये ला तोरण द्वार मेढी एटा ला मेढी एनक्लोजर वॉल एटा ला बाहर पूरा बढ़िया लागुनी आय, बहुत भलो बहुत बढ़िया ओके Stupa architecture in North India. There are very little information, history are related. Gupta period is considered to the golden age of Indian history. The Gupta are Vaishnavis thile, eman Buddhist no thile, but tolerant towards Buddhism. It is said that Stupa at Sarnath was built during Gupta period. Stupa architecture in South India. So architectural movement in South, Andhra flourished under Satvahana. Rock cut architecture of Hinayana sect became more prominent. Mauryan समय इंडो ग्रीक समय एमती डेवलप होती इंडो ग्रीक सेकेंड सेंचुरी बीसी ये एमती डेवलप होती तापर धीरे इंडो ग्रीक इंडो एशियन समय एमती डेवलप होती फोर्थ स्टेज फिफ्थ स्टेज कुषाण समय एमती डेवलप होती अर्ली इवोल्यूशन ऑफ स्तूपा So post-Mauryan Samara, after decline of Mauryan Empire, second century BC, small dynasty sprang up in various parts of India. Among them, Sunga, Kanva, Kusana, Sakas in the north, and Satvana, Ixabeku in the Aviras. And Vakataka in southern and western India gained prominence. Similarly, the religious scene saw emergence of Brahminical sects such as Saivetis, Vaishnavitis, and Shaktitis. The art of this period started reflecting the changing socio-political scenario as well. The architecture in the form of rock-cut cave and stupa continued with each dynasty, introducing the same unique feature of their own. Similarly, different schools of sculpture emerged and the art of sculpture reached its climax in the post-Mauryan period. चैत्या विहार मु कही रॉक रॉक केव रे कौन ना दीटा था गोटे चैत्यास 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 बेसिकली प्लेस ऑफ वर्शिप जो भगवान रुहंती प्लेस ऑफ वर्शिप विहार विहार बेसिकली विहार
प्लेस ऑफ रेस्ट आमर कार्ले चैत्या हॉल अजंता केव माने केव भितरे तुम्हें पूजा मंदिर पाइबो जेमती उदयगिरी खंडगिरी केव ओडिशा रे हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन हैव यू सीन उदयगिरी खंडगिरी नरेंद्र गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करिया हेले बहुत सारा गवर्नमेंट रो बहुत सारा पोस्ट अच्छी बट मेजोरिटी जगह तुमको जड़े ग्रेजुएट हवा पड़ो मिनिमम गोटे ग्रेजुएशन हवा पड़ो एवं किछि किछि जॉब अच्छी जो +2 क्वालिफिकेशन हो उदयगिरी रे खंडगिरी उदयगिरी 18टा कैब उदयगिरी रे अच्छी 15टा कैब खंडगिरी रे अच्छी एंड मोस्टली जैना ये खारवेल करथिले खारवेल समय होता जैना यस वेरी गुड देखी जदि जैना समय कलिंग किंग खारवेल अराउंड 1st to 2nd सेंचुरी बीसी समय भुवनेश्वर हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन लेखा है ब्राह्मी स्क्रिप्ट The inscription start about the Jain Namukar mantra highlight various military campaign undertaken by King Kharavela. Rani Gumpha cave in Udayagiri is double storied and has some beautiful sculpture. नरेंद्र तुम्हारे क्वालिफिकेशन कौन व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन नरेंद्र कौन क्वालिफिकेशन तुम अच्छी देले मु कहि पारि तुम कौन एग्जाम पाई पढ़िया दरकार ये कौन तुम प्रथम क्वेश्चन थिला सर न पढ़िले कौन हम एग्जाम न पढ़िले कुछ नहीं होता है पैसा बहुत रखीच ताले नरेंद्र कौन भावुच बहुत पैसा देकी कौन कौटी हो ना कौन okay so that's it for today guys thank you for being with me for last 50 minutes ये सेशन मोर सरला ए वीक रो आज काली आ हबनी तुमर क्लासेस आर्ट एंड कल्चर नेक्स्ट वीक पर देखिबा सो आमे स्तूपा आर्किटेक्चर तार इवोल्यूशन देखिले तार फीचर देखिले आर्किटेक्चरल फीचर इंपोर्टेंस ये सब देखिले okay guys thank you if anything else anything you have in your mind any doubt you have let me know thank you for watching जदि ये क्वेश्चंस ता जे करिया चाहिबो मेंस रिलेटेड राइट डाउन द इवोल्यूशन ऑफ स्तूपा आर्किटेक्चर एंड एलाबोरेट इट्स आर्किटेक्चरल फीचर एंड इट्स सिग्निफिकेंस जोटा पढेली सेइथुर गुटे क्वेश्चंस आसीबो डेफिनेटली एगुडा आसे ए भलिया आई होप तुम पई ये बेनिफिट दबो थैंक यू
Pihu, don't read much NCERT. If you want to read, yes, you can read now. From class 6 NCERT, geography part पढ़ो आगे start करो, geography रू start करो, and then धीरे धीरे you will get to you. So find it out. Contact करो जदि किसी information दबार थी मुझे दे भी तुमको problems अच्छी. Okay, thank you guys. हाँ, न्यूज़पेपर मस्ट एवरी डे न्यूज़पेपर पढ़, इश्यू बेस्ड न्यूज़पेपर पढ़, राजनीति विषय रे कार एक्सीडेंट हो गला कौन हो गला सब बेसी देखिया दरकार नहीं, सिलेबस ओरिएंटेड ही देख देन सेटा को फायदा हम. थैंक यू गाइस, समस्ते गोटे लाइक जरूर करिक जीव एंड कमेंट देकी जीव. थैंक यू.